Welcome to Gyan Soot Talks, where we react to what the whole nation is watching and break it down for you. Behind every viral clip, every trending topic, there's something deeper, a lesson, a mindset, a chance to grow. We learn, grow, and laugh along the way. From daily life skills, to personality development, to understanding your emotions, we're here to help you level up, one clip at a time. Building clarity, curiosity, and confidence. This is the GST breakdown. Hello, Dada. What's going on? Hello. How are you? I'm good. I'm good. What's going on? Nothing, just working. And you? Same, man. Same. Busy. Weather is very bad. It's raining. Yeah, it's been raining couple of days last non-stop, bro. Pretty bad weather. With the video number 4. Look, before we jump into anything, this is the thought that came to my mind. Let's ask yourself this. Are you chasing something right now? Maybe money, success, or validation? But you've never really stopped to ask why. Yeah, you are right about it. Because it's like running a marathon. Like यार कोई सिंपली ऐसा है कि कोई दौड़ में भाग रहे हैं पर ये नहीं पता कि फिनिश लाइन कहाँ है. तो Yeah. वो वाली बात है, हम अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, एग्जॉस्ट हो रहे हैं, पर कोई रिजल्ट नहीं आ रहा. Mm. और उसके बाद फिर बंदे Mm. क्या करते हैं, उसके बाद बंदे डिप्रेस हो जाते हैं कि भाई कोई अच्छा आउटकम नहीं आ रहा. तो Mm. एनर्जी वेस्ट करने से पहले ये भी देखना पड़ता है कि इसका आउटकम क्या होगा. Today's episode is going to be a little bit different. It's going to be, I think, very simple but real. Because look, the journey actually starts within. So let's start from inside, what's inside us. What are we doing? Why are we doing it? अभी मजा आएगा ना भिड़ो. What do you think? Yeah. No, it's a good idea. Let's do it. So basically when you open the Instagram, जब इंस्टाग्राम खोला है यार, तो तू देख है दुनिया ने कि भाई किसी ने नई गाड़ी ले ली, कोई कहीं घूमने जा रहा है, कोई मतलब अचीव कर रहा है लाइफ में. तो ये चीज देख के कई बार बंदे डिप्रेस हो जावे कि भाई पता नहीं लाइफ किस साइड जा रही है. बंदा मेहनत कर रहा है पर फिर भी आउटकम नहीं आ रहा. और जैसा इंस्टाग्राम पे दिख रहा है कि भाई दुनिया, और इंस्टाग्राम, फेसबुक, यार कहीं भी मतलब चले जावे, कोई भी सोशल मीडिया साइट पे, तो यो लगे है कि भाई सब कुछ ना कुछ अचीव कर रहे हैं और मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसका कोई आउटकम नहीं आ रहा लगता है. But see, even in my opinion, right, a lot of us, a lot of this 9 to 5, all this rat race, hustle culture, whatever you want to call it, a lot of people don't even know who are they doing this for. That's why you know what's happening. You see people buying expensive cars. You see people traveling a lot. You see people always talking about their work, but there is lack of fulfillment. Right? I've done 9 to 5. I've been a corporate person for a very long time. It's like a mountain, right? Yeah. First you go up, then you hit the rock bottom. So you get to the very bottom. In a way, if I can say, that's what happened with my corporate part of my life. But truth is also this, Vinay, that if you will not define success for yourself, अगर तुम अपने लिए डिफाइन नहीं कर पाओगे कि सक्सेस क्या है, तो फिर वर्ल्ड डिफाइन करना स्टार्ट कर देगा. जैसे सोशल मीडिया पे चेक करा, हाँ भाई ठीक है, ये बड़ा घर ले लिया तो ठीक है भाई, मने भी बड़ा ही घर चाहिए. बड़ी गाड़ी ले ली तो मने भी बड़ी गाड़ी चाहिए. तो यो चीज है जो डेंजरस है. बेसिकली बंदे ने खुद डिफाइन करना चाहिए कि उसके लिए सक्सेस क्या है. See, the point is, it's not, obviously, I would never say that I'm against working hard. Hard work is the best thing. Hard work is my go to policy in life.
However, what I say is always, especially for the younger generation, this is what I want to tell everyone who's young. Along the line, find out your why. Why am I doing this? You know, find that out. Otherwise, you know what's going to happen? You will be putting in 8, 10, 12 hours of your day for someone else, go to bed, grow someone else's company, and then feel at the end of the day, you will sleep feeling unfulfilled. एक चीज और है इसमें विनय कि भाई देख, लाइक यू आर डूइंग हार्ड वर्क, बट हार्ड वर्क किसके लिए कर रहे हो? अपने लिए या किसी और के लिए? तो ये Exactly. चीज भी डिफाइन करनी पड़ती है लाइफ में कि भाई अगर हार्ड वर्क कर रहे हो, लिटरली आई एम डूइंग हार्ड वर्क, आई एम वर्किंग इन कॉर्पोरेट, सो आई एम गेटिंग अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी। और भाई जब कंपनी के हम देखते हैं तो कंपनी को होते हैं बिलियंस ऑफ डॉलर का प्रॉफिट। Exactly. हमारी सेम सैलरी है, हमें सेम पैसा मिल रहा है, मैक्सिमम वे हमें पिज्जा खिला देते हैं कि हाँ भी कंपनी को बिलियंस ऑफ डॉलर का प्रॉफिट हुआ है तुम्हारी वजह से, तो तुम्हें भाई पिज्जा मिलेगा। एक दिन हमें पिज्जा खिला दिया और भाई उससे दुनिया खुश होगी। सो Yeah. ये सक्सेस नहीं है। Exactly, bro. Someone told me when I got my first job, someone told me, you are just a number. At that stage, I was too young to understand what he's saying. But after a couple of years, I went to management positions and, started going to more senior level where I was like, okay, I'm controlling this and I'm running this much work. It's all of this is happening under me. So there comes a time when I was a little bit in a dilemma that without me, this work is, or this place is not going to run without me. This company can't run without me. Okay. And I'll tell you exactly a little bit after that hits the reality. Then I get a job offer from another company, much bigger company, better pay. And I was like, yeah, maybe it's time to move on. When I joined, when I started that new job, I'll tell you, यार मेरे दिमाग में ना ब्रो, पता है क्या चल रहा था उस टाइम पे? मेरे को एक नई जॉब मिल गई, मेरे को अच्छे पैसे मिल रहे हैं। 2 weeks after I left, I went back to check in how is the place going. Everything was running, maybe not the same way, but it was running. And I was like, you know what came to my mind in that stage? What? You are just a number. You are just the number. One thing that I picked up was always work on improving yourself. Always, when you are working for someone, I look at my working time as my improvement chart. Whenever I'm working for a company, I want to gain skills that I didn't have in my previous role. भाई देख, अगर कंपनी में काम करना कोई गलत नहीं है, मैं भी कंपनी में काम कर रहा हूँ, नॉलेज गेन करी है, 5 कंपनी चेंज करी है, अलग अलग कंपनी में गया हूँ, नॉलेज अलग अलग जगह अलग अलग मिली है। पर अब जैसे मैं सोच रहा हूँ कि मैं कोई बिजनेस खोल लूँ, क्योंकि मेरे पास नॉलेज है। ठीक है, नॉलेज मैंने कहाँ से गेन करी है? जब मैंने कॉर्पोरेट में काम करा है। पर बिजनेस खोल लेता हूँ, ठीक है, कूल। पर बिजनेस मैं अपनी फ्रीडम के लिए खोल रहा हूँ या किसी से शो ऑफ करने के लिए खोल रहा हूँ, यो भी डिपेंड करे ना। अब मैं मेरे पास नॉलेज है कॉर्पोरेट की, खोल मैं रेस्टोरेंट लूं शो ऑफ करने के लिए कि हाँ भाई मैंने तो रेस्टोरेंट खोल लिया, कोई नॉलेज नहीं है, पैसा टाइम वेस्ट करूंगा, एनर्जी वेस्ट करूंगा, कोई सेंस नहीं बनता इस चीज का। तो
यो भी सोचना है कि भाई अगर तुम किसी डायरेक्शन में जा रहे हो तो ये डायरेक्शन ठीक है या नहीं है। जो तुमने नॉलेज गेन करी है, अगर तुमने रेस्टोरेंट ही खोलना है तो पहले तुमने रेस्टोरेंट की नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। उसके लिए किसी के पास काम भी करना पड़ेगा। यूं तो है ना कि नॉलेज खुद ही चल के आ जाओगी। Yeah. तो मेरा ओवरऑल कहना ये है कि अगर द बिजनेस बेसिकली इन बिजनेस यू आर वर्किंग मोर देन द कॉर्पोरेट आवर्स, क्योंकि कॉर्पोरेट में 8 घंटे 10 घंटे फिक्स टाइम है, पर तेरा खुद का बिजनेस है तो भाई तने 14 घंटे भी काम करने, 16 घंटे भी काम करने और 20 घंटे भी काम करने, क्योंकि वो तेरा खुद का काम है। में एनर्जी जो है सही जगह लग रही है। पहले 8 घंटे काम कर रहा था, अब 16 घंटे काम कर रहा है, बट Hmm. जो अर्निंग्स होगी वो तेरी खुद की होगी। जो भी कमाओगा, जो भी नहीं कमाओगा वो भी। लॉस और प्रॉफिट इट विल बी ऑन योर ओन एक्सपीरियंस। Yes. टाइम लगता Hmm. है कि भाई बिजनेस सेटअप करने में थोड़ा टाइम लगेगा। कहीं भी तुम नई कॉर्पोरेट कंपनी में जाओगे, स्टार्ट करना पड़ेगा स्क्रैच से ही, चाहे कितने ही साल का एक्सपीरियंस हो। न्यू कंपनी में जाओगे, Absolutely. start from the zero. Same here. If you are, if you decided to open a business and you are going to open a business with, it will be with zero, so you need to learn new things Hmm. to continue to build this business। और Hmm. यही काम हो सकता है कि फिर या किसी और के लिए काम करो जिंदगी भर। और बेसिकली मेरा जो है मोटिव बिजनेस ओपन करने का वो ये है कि मेरे पास फाइनेंशियली फ्रीडम। अभी जो है एक स्पेसिफिक सैलरी के उस पे काम कर रहे हैं जो कि जिंदगी भर चलेगा नहीं। मेरे को चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम कि भाई मैं कहीं भी जा सकूं, अपने पेरेंट्स के पास इंडिया में, Hmm. अपने यार दोस्तों के पास कहीं भी, और मुझे किसी को जवाब ना देना पड़े कि भाई इतने दिन तू कहाँ था। क्योंकि कई बार क्या होता है कि यहाँ ऐसा हुआ है कि फॉरेनर्स है, हम सारे यहाँ रह रहे हैं, इमिग्रेंट्स हैं, डिफरेंट Hmm. कंट्रीज से आए हुए हैं। तो भाई अगर बैक इन द फैमिली, घर पे फॉर एग्जांपल इंडिया में फैमिली मेंबर्स को किसी को कुछ हो जाए तो पूरी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है कि भाई क्यों हाँ, जा रहा है, कितने दिन के लिए जा रहा है, क्या कर रहा है। चाहे कितनी भी नॉलेज हो, चाहे एक बंदा कितना भी हार्ड वर्किंग, अगर तुम्हारा कुछ खुद का है तो तुम कभी भी जा सकते हो। तुम्हें किसी को कोई जवाब नहीं देना कि भाई मेरी मम्मी बीमार है, मेरा पापा बीमार है, मुझे ये काम। there is a quote that I'll read the quote to you. When you know your why, the how becomes easier. ठीक है, मतलब जब आपको ये पता लग जाएगा ना कि मेरे को क्यों करना है कुछ। अब जैसे ना आपका विजन है, क्लियर है कि यू वांट फाइनेंशियल फ्रीडम, यू वांट टू कंट्रोल योर ओन टाइम and you want to grow, but you are not scared of putting in extra hard work, right? So you already know your why, right? I think when you start taking action and use your skill set, your how is going to become very, very easy. ठीक है, तो ना आपका जो रास्ता है ना वो आपने पहले ही यू पेव्ड द पाथ फॉर योरसेल्फ। ठीक है, आप स्क्रैच से कभी स्टार्ट नहीं कर रहे। सी, if you only think that you are getting paid out of your job is your salary in terms of money I'm speaking, then you are not doing it right. You salary is what you get for the work you do, but improving yourself every day, looking at yourself in the mirror, saying, I did this wrong. How can I improve myself? Or someone else did something really amazing. How can I make myself better? You know what that is going to do? That is going to give you, first of all, a lot of confidence. It will improve you.
but that also will help you grow personally. In my opinion, what people do as soon as they join a profession, personal growth graph goes down and professional growth graph keeps going up. This needs to go hand in hand. This needs to go together. You need to keep growing. You can't stop growing, regardless who you are working for. You can never stop learning. कभी भी ना लाइफ में आप ये नहीं बोल सकते कि I have learned enough. The people who say that कि I've learned enough, they stop growing immediately. बात तो सही है. See, what I want to say in this, that yes, you need to grow even if you are working in a corporate or you are working on in your own business. बट कई बार बंदे क्या होते हैं कि थोड़े सेल्फ डाउट में आ जाते हैं कि भाई इंस्टाग्राम देख लिया, सोशल मीडिया पे देख लिया कि भाई इस बंदे ने इतना अचीव किया, इस बंदे ने ये कर लिया, वो कर लिया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइफ के अंदर एक गोल सेट कर लो कि भाई कोई कितना भी जो भी कर रहा है, उसने अपनी लाइफ में जो करा है ठीक है, मैं अपनी लाइफ में ये करूंगा. भाई मैं बताता हूँ, मैं सोशल मीडिया पे है ना, लास्ट टाइम पता नहीं इंस्टाग्राम पे कब पोस्ट करा था. घूमने में जाता हूँ, सारी जगह जाता हूँ, पर मैं कभी भी है ना इंस्टा पे या व्हाट्सएप पे कोई स्टोरी नहीं, कोई कुछ नहीं लगाता, क्योंकि मुझे किसी को दिखाना ही नहीं है कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ. सीधा सा ये हुआ कि भाई जो भी है मेरा एक गोल है, मैंने वो सेट कर रखा है, अपने मस्त वो जी रहा हूँ मैं. मैंने किसी से कोई लेना देना नहीं है कि भाई दुनिया मेरे बारे में क्या सोच रही है, कि दुनिया मेरे बारे में देख रही है कि भाई वो कहीं जा रहा है ना जा रहा है. भाई सीधी सादी बात है, मैं अपनी लाइफ एक मैंने गोल सेट कर रखा है कि मैंने जिंदगी में ये चीज अचीव करनी है, और मैं वो एक मैराथन रन कर रहा हूँ और मैंने पता है मेरा फिनिशिंग पॉइंट क्या है. मैंने वहां जाके मैंने रास्ते में नॉलेज गेन करनी है, एक्सपीरियंस गेन करना है, और मैंने वहां जाके मेरी फिनिश लाइन है, वो जाके मैंने अचीव करना है. उसके बाद ऑफ कोर्स लर्निंग मैं फिर भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरा खुद का बिजनेस होगा, जब भी मैं डे टू डे लाइफ में कुछ ना कुछ नया सीखता रहूंगा. क्योंकि यू आर व्हेन यू हैव योर ओन business or you are working in corporate, you are always meeting new people and they always give you a knowledge. It can be good or bad, but you can keep the good one and you can leave the bad one. Always यार कोई भी चीज सीख रहे हो, उसमें से जो चीज तुम्हारे मतलब की है वो रख लो, बाकी छोड़ दो. सिंपल सी बात है. आज की जो एनवायरमेंट है उसमें एक चीज नोटिस करना कभी भी आप, 90% ऑफ द पीपल, जब आप उनसे ये पूछोगे ना कि हु आर यू, वो पता है क्या बोलते हैं? यार आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई वर्क फॉर दिस कंपनी XYZ कंपनी, एंड you know, this is what I've been doing, I've developed this and I've done this, and I'm not asking you what you do, I'm asking who are you, you know. So I feel majority of the people, their identity is their work. They are identifying themselves by what they do. You know, they are like, I work for this big company, I'm a accounts manager, and I do this and I make that much, and this is what my day is like. They never say, hey, I'm a dad to an amazing daughter, and I have a family, and this is who I am. Work is a part of your life. Work is not your life. You know when that happens? That happens when you stop learning, your personal development takes a pause, it comes at a full stop, and you're professionally growing. You stop growing personally. That's when that happens. That's when your identity changes. Your self awareness
that starts disappearing. You stop talking about your the real things in your life. You only talk about how what do you do for living, what does your job represent, how important is the company that you work for, how big is the company that you work for. मैंने एक बात बताऊं इसमें, जो हाँ, बात कही ना बहुत अच्छी बात कही है भाई। मैं एक बात बोलना चाह रहा था विनय कि आज के टाइम पे ना वर्ल्ड में लोगों ने अपनी लाइफ जो है वो वर्क के इर्द गिर्द लाइक अराउंड द वर्क दे स्टार्ट टू बिल्ड द लाइफ। दे डोंट हैव लाइक वर्क लाइफ बैलेंस। तो मेरे हिसाब से कि ठीक है यार काम कर रहे हैं, क्यों काम कर रहे हैं, कहीं भी जॉब कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, हम किस लिए कर रहे हैं? ये सर्वाइवल है कि भाई पैसे चाहिए लाइफ में, फाइनेंशियल फ्रीडम होनी चाहिए। पर एक और ड्यूटी इसके साथ आती है कि हमें अपनी वर्क लाइफ बैलेंस भी करनी पड़ती है कि भाई वर्क इतना करेंगे, फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना है। ये नहीं कि हम नॉलेज गेन करते हुए, पैसे कमाते हुए अपनी पर्सनल लाइफ जीना छोड़ दे। और आज एग्जैक्टली। के टाइम पे ऑल ओवर द वर्ल्ड ये चीज बहुत ज्यादा है कि बंदे जो हैं वो इतना ज्यादा फोकस हो जाते हैं काम करते हुए कि वे पर्सनल लाइफ जीना ही छोड़ देते हैं, जो कि बहुत गलत है। लाइक बेसिकली यार एक काम कर रहे हो तुम, उस काम का जो तुमने हार्डवर्क करा है उसका जो भी पैसे हैं, सैलरी यू आर गेटिंग, मनी यू आर गेटिंग, उसको यूज भी तो करो ना। अब तुम ये सोचते रहोगे कि भाई मैं अभी तो काम कर रहा हूँ, अगले 40 साल तक काम करूंगा, फिर उसके बाद रेस्ट करूंगा। अगले 40 साल देखे किसने है भाई? सो यू नीड टू स्टार्ट टू वर्क and live your life together. You cannot think like I will be working for 40 years and then I will start to have fun. भाई हमें अगले 40 मिनट का नहीं पता कि अगले 40 मिनट में क्या हो जाएगा। 40 साल तो हाँ, बहुत दूर की बात है। बहुत बड़ी बात है, सही बात है। I think there is no work life balance. People are trying to balance their life around their work. That's what they are doing. Yeah. So what I want to say here that we should now, or people should now basically redefine the success. So जो मेरे लिए सक्सेस है वो है कि भाई मेरा अपना काम अच्छा चले, मैं लाइफ में कुछ सीखता रहूं, और एक जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो कि भाई मेरा फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कर सकूं, मेरे पास फाइनेंशियल फ्रीडम भी हो। तो लोगों को अपने हिसाब से सक्सेस जो है वो डिफाइन करनी चाहिए। ये नहीं कि भाई बड़ा घर, बड़ी गाड़ी सक्सेस हो गई, नहीं, वो सक्सेस मेरे हिसाब से नहीं है। मेरे हिसाब से बंदे each individual have their own way of success. I think you're right. A lot of people should redefine success in their life. This is what I feel. First of all, don't measure success by copying someone. और दूसरी चीज है यार कि if you are happy with yourself, that's good. If you are not, make promises to yourself. If you are doing something wrong, don't do it. If you are lacking some skills, learn. If you are not talking to your family enough, if you're not spending enough time with your kid, give them that time. Work on it. है ना? Priorities बना लो लाइफ में. प्रायोरिटीज होनी चाहिए। To conclude it from my end, look, anyone who's watching, if this episode got you thinking, that was the goal. That's what we wanted to do. This was the GST breakdown. Where growth start with the awareness. Like, subscribe, and comment your thoughts. And if this made you reflect, pass it on. Maybe someone else need to hear it too. See you in the next one. See you in the next one. Bye bye. Bye.